सो हाय एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूएस इलेक्शन के बारे में। विल डिस्कस कि यूएस में क्या चल रहा है। अगले साल चुनाव होने वाला है। अगले साल इंडिया में भी चुनाव होने वाला है, यूएस में भी चुनाव होने वाला है। दो बड़े डेमोक्रेसी में चुनाव होने वाले हैं। तो आज का फोकस होगा यूएस इलेक्शन डिस्कस करने के लिए। हमारे साथ वी हैव आयुष, को फाउंडर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। वी ऑल्सो हैव दिव्य, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं। शेफील्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हुई और एक बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रखते हैं। सो ही विल बी इनरिचिंग अस विद द यूएस पॉलिटिक्स। साथ में वैभव है, जो जार्विस के डायरेक्टर थे, अब ये अपना स्टार्टअप चलाते हैं। इनकी भी काफी इंटरेस्ट है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। इनका बिजनेस भी यूएस में चलता है, इनकी प्रोडक्ट भी यूएस में चलता है। तो ये भी यूएस इलेक्शन को काफी क्लोजली फॉलो करते हैं और इंडियन पॉलिटिक्स में काम किए हुए हैं। तो विल हैव अ वेरी इनरिचिंग सेशन। सो वेलकम यू ऑल फॉर द टुडे सेशन। आज हम लोग शुरू करते हैं। तो आई थिंक सबसे पहले शुरू करेंगे कि बेसिक, यदि देव एंड वैभव, देव से शुरू करके वैभव, इफ यू कैन गिव एन इंट्रोडक्शन की वहां पे टू पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेट्स है, रिपब्लिकन्स है। तो कौन लोग हैं ये? आई मीन क्या इनकी आइडियोलॉजी है, क्या इनका झंडा का कलर है, क्यों है, कौन इनके नेता रहे हैं, क्या आइडियोलॉजीज है, मतलब एक लेमैन इंडियंस को क्या डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन के बारे में, मतलब हु आर दे? Web G, do you want to start or? Go ahead, Deep. Okay, so first of all, thank you for the introduction, Bharti ji. First, I'd like to say that I'm not an expert, just an avid follower. Experts usually have more ground information, but because we sit so far away from the ground in terms of a US election, we are also consuming the same information. I think the difference here is that how we assess it might be different. In terms of the US election, I think अगर हम Indian elections and Indian democracies इसको compare करें, तो one of the biggest differences that someone needs to understand is कि we are a parliamentary prime minister type system and they are a presidential election. उसमें सबसे बड़ा difference what that means is कि इंडिया में we primarily have a head of government and then we have a ritualistic head of country. US में you have the president who is head of the country, and that is not a ritualistic or just a position that is for a plaque. That is an actual powerful, meaningful position that the people of the US have a right to vote for. तो ये बहुत एक important distinction है. इंडिया में हम political parties के लिए वोट करते हैं. इंडिया में हम we vote for our own local representatives who then come together and elect a leader who tends to be the head of the government. US में people have a system where they vote directly for the head of the country. उनके भी खुद के पार्टी सिस्टम्स हैं, they have different affiliations people vote for, but ये एक बहुत बड़ा difference है कि we effectively don't vote for the head of the country or the head of the government. We vote for our own individual local representatives who then go on to select the leadership of the country, which is what our British parliamentary system is. US where that's different. From a party perspective, the US is a very mature democracy, and there's a lot of political science that talks about कि कहीं पे भी अगर you have something called as first past the post system, which is 50 से ज्यादा वोट आए, 50% से ज्यादा वोट आए, तो you win, right? तो अगर if you have any form of that, it tends to end up having a bipolar election, a bipolar system. US is a big example of that. उस सेम पॉलिटिकल थ्योरी का बिगेस्ट जो हम बोलेंगे डिट्रैक्शन है, दैट इज इंडिया, बिकॉज इंडिया consistently had a multi-party system, but I think as India is maturing, we see that India is also becoming bipolar in its elections. But going back to the US primarily has two large parties, जिनको colloquially we call the Republicans and the Democrats. The Republicans are, there's also, it's important to understand कि ideologically where the Republicans and the Democrats stand today, largely that comes from modern US politics. So post 1960s, उससे पहले they had different affiliations, different views, but आज की तारीख में the way we see them and the way they project themselves, it's very reminiscent of how they've acted since the 1960s.
Republicans are what you will call traditional conservatives, as they like to present themselves, and Democrats are liberals, effectively liberals, more progressive. Conservative and liberals का हमारे यहाँ पे थोड़ा सा देवे कंजर्वेटिव भी क्या होता है, लिबरल्स भी क्या होता है उस लेवल पे. I was getting to that. तो जो ये टर्म्स है कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, इन सब के डीप पॉलिटिकल थ्योरी में इनके बहुत मतलब डीप मीनिंग्स है. बट आई थिंक अगर अपन उसको लेयर करें टू मॉडर्न पॉलिटिक्स, लार्जली ये डिफरेंसेस आर नाउ डाउन टू मेजर इश्यूज. ठीक है. अगर आप इसको पॉलिटिकल थ्योरी से देखिए तो पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब से a conservative is largely someone who believes in small governments, small mandates, and small taxation. By nature, it means small taxation because they believe in a small government. So less taxation, more efficient systems. That's what they believe in. The US may that means ऐसे बताए तो लिबरल्स डिसेंट्रलाइज्ड पावर में बिलीव करते हैं एरिया से. We get to that. Okay. I think more important it's understand is कि usually आप किसी भी आइडियोलॉजी को बहुत सारे फैक्टर्स में देख सकते हो. तो अगर आप यूएस के पर्सपेक्टिव में देखो या इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखो, अगर आप देखो यू हैव सोशल इश्यूज एंड यू हैव इकोनॉमिक इश्यूज. करेक्ट. तो कंजर्वेटिव्स विल लार्जली बी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज दे विल बी कंजर्वेटिव, and in social issues they'll be conservative, and liberals or Democrats will be progressive in social issues, and they will again be progressive or more socialistic in their economic issues. Within the US construct, what that means is ki, if you are a liberal, you believe in larger state help, state welfare systems, ki they will believe in bigger programs that directly support the people. Conservatives will argue differently. They'll argue we need smaller welfare systems. We don't need a very aggressive state that is effectively taking care of a lot of different factors of people's lives. And ये समझने की जरूरत है कि West post 1945, so post Second World War, a large distinction of Western economies was their welfare systems. So you have the US, you have the UK. So the UK has the large NHS system, which is the National Health Service, which basically means that anyone who is who lives in the UK, who's a citizen of the UK or a resident of the UK, they have access to free and completely large access to healthcare. And then they also have things like employment support and a lot of other things. So largely, welfare systems have been a big distinction of Western democracies post Second World War, and our countries were different in the sense कि we had अगर आप देखिए, अगर हम Eastern blocks में देखते हैं, and you take a country like India, which wasn't necessarily aligned with a bloc, but they had strong political alliances with the Eastern Bloc more than the Western Bloc. So the Western Bloc strongly believed in capitalistic systems. So free enterprise, private enterprise. Most utilities are run by private entities, not state entities. When you come to the East, you have primarily utilities, systems run by state governments. एक बहुत बड़ा example इसका ये है, you can look at something like railways. तो इंडिया में I think Dev has lost the connection. आयुष आप म्यूट पे हो. I think connection issue या कुछ चल रहा है. ठीक है. ठीक है. I think जब तक वो join करते हैं तब तक. I think Vaibhav, you can start. हाँ. वैभव, आप तो वो बताइए ना कि वहां पे दो पार्टी ही है या दो प्रोमिनेंट पार्टी है, मतलब रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक प्रोमिनेंट है, या फिर वहां पे तीसरा कोई क्रांति लाके कोई खड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो मैं दिव्य, जहां से दिव्य ने छोड़ा, आई विल जस्ट समराइज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से. दिव्य इज बैक, बट I'll go ahead. I'll summarize what Div was trying to say. So Republicans, in general, ideologically, they want reforms. Economically, they want less control of the state.
उनका है कि हमें कैपिटलिज्म चाहिए, हमें छोटे बिजनेसेस, लार्ज बिजनेसेस सबको प्रमोट करना है। हमें ये नहीं देखना है कि गूगल इतना बड़ा हो गया दैट गूगल कैन कंट्रोल यूएस। ये सारी चीजें दे डोंट केयर अबाउट। On the other hand, Democrats, they want more control of state on economic issues. They want they run big welfare schemes. Obama ने, when Obama came, he started Obama के, I think India में भी सब लोगों ने सुना होगा उसके बारे में. Biden is also running few of these public welfare schemes. Republicans don't believe in that. उसके साथ साथ on social issues, Democrats are so-called progressive. For instance, they are open supporters of LGBTQ rights. They are against abortion. On like अलग-अलग big social issues में they are supporter of what US had some form of reservation in education. I am forgetting what do they call it. देव आप म्यूट पे हो तो अनम्यूट करके आपको बोल रहा हूँ. I'm sorry, maybe I had a power cut and then the inverter kicked in. Yeah. I was saying go affirmative. They call it just अपने आप reservation कहते हैं. They use the more political theory term affirmative action. Yeah. So Democrats are supporters of that. Republicans are not. ऐसे ही मतलब on major most of the social issues they differ. To your question, Ayush, all parties हैं या नहीं है? There are bunch of other parties. There are far right parties and there are radical left parties. But वो काफी छोटी है. मतलब they fail to prove any mark in any major election. I'm not sure if any of the city council is run by any of those smaller parties. But they are almost as good as non-existent. मतलब ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेट्स कांग्रेस है और रिपब्लिकन भाजपा है आइडियोलॉजिकल बेसिस पे. नहीं बोल सकते क्योंकि इंडिया में इकोनॉमिकली कांग्रेस और भाजपा दोनों हैव बीन प्रो पब्लिक वेलफेयर. दोनों के फॉर्मेट्स अलग होते हैं, दोनों का एग्जीक्यूशन अलग होता है. But Congress and BJP both are economically almost same. Politically, BJP takes a little harder, little more aggressive stance on things like Hindu nationalism, which Congress doesn't. So politically, थोड़ी बहुत Congress is Democrat, but again, like Congress have their own conservative section. We still don't know what is their stance for. What is their stance on, for instance, LGBT rights in India and other progressive matters. राइट लेफ्ट बोले तो राइट तो फिर रिपब्लिकन्स राइट और डेमोक्रेट्स लेफ्ट ये तो बोल सकते हैं. Yes. जी. I think there will be a lot of right, R for Republicans. मतलब आम जनमानस को याद करने में ठीक रहेगा. नहीं, but इसमें I think I like to say कि even in the US, like in India, they also have a federal system and then they have states. So parties will emulate different values at a different level. India में भी जैसे you'll have parties acting differently at a central level and then acting differently at state level in different regions. तो इतनी यूनिफॉर्म आइडियोलॉजी नहीं रन होती है. जैसे ओबामा केयर जो आप बोल रहे हैं, जो वहाँ का लार्ज हेल्थ केयर सिस्टम जो ओबामा के टाइम पे पुश हुआ था, a version of that was actually initially run by जो ओबामा के 2012 के रिपब्लिकन ओपोनेंट थे, जो रिपब्लिकन नॉमिनी थे, मिट रोमनी. तो मिट रोमनी very similar healthcare welfare system in the state of Utah where he comes from. So he was a proponent of that exact system in his state. But then in 2012, when he was fighting against the Democratic then incumbent Obama, he was against that exact policy, which is something he championed at the state level. So हमारे यहाँ पे जैसे इंडिया में we have difference in opinion in terms of क्या politically convenient है, they have the same process. ठीक, आगे बढ़ते हैं. तो एक बार दो तीन जो बड़े प्रेसिडेंट रहे, आर फॉर राइट विंग, आर फॉर रिपब्लिकन्स, कि दो तीन चार पांच बड़े नाम रहे हिस्ट्री में, वो कौन रहे जिसको इंडियंस जानते हो, और डेमोक्रेट्स में मतलब लेफ्ट डेमोक्रेट्स में कौन रहे, एक बार वो बता दे, सो दैट आदमी लोगों को रिलेट करने में थोड़ा आसान हो जाएगा. I think Republican में तो I think three largest names in the modern American history is Ronald Reagan, George H. Bush, George Bush Jr. So 2000 election,
and then finally Donald Trump. I think these three will be the most popular people will know. ट्रम्प का Ronald तो Reagan, because our parents' generation will know them. Yeah. ट्रम्प का तो आई थिंक लोगों को पता है क्योंकि अभी चल रहा है। जॉर्ज बुश जूनियर का लोग वैसे याद रखते हैं कि उन्होंने इराक पे हमला करवाया था और वो वाली चीज है ऐसे ही। Especially because during the September 11 terrorist attacks वहां पे उसकी वजह से वो उनके टाइम पे था। और जो रोनाल्ड रेगन है उनका जिसे मेरे को कुछ नहीं पता है, तो एक या दो चीज जिससे रिलेट कर सके, ऐसी कोई बड़ी चीज। आई थिंक एक बड़ी चीज ये रिलेट कर सकते हैं, रिलेट तो क्या मतलब जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू यूएस के बिग फेमस अगर कोई प्रेसिडेंट लोग जानते होंगे तो वो जॉन एफ कैनेडी को जानते होंगे, राइट? वो डेमोक्रेट थे, एंड उसके बाद दे हैड अ स्लू ऑफ डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन लीडर्स जो इतने पॉपुलर नहीं थे, एंड देन दे हैड द बिग रिपब्लिकन लीडर दैट formed the modern Republican Party was Ronald Reagan, and Ronald Reagan was a very populist right-wing leader, which was different from previous Republican leaders जो बहुत जैसे जी बता रहे थे बहुत ideologically small government and all. Ronald Reagan ने इन सब ideology को strongly बोला, but then he was more populist in his approach, so that's why he's very big. And one of the reason why he's very popular was he won with a super majority in terms of electoral votes. I think I don't exactly remember, but I think he had 48 states in his टोटल कितना favor in his first election. वह डेमोक्रेट्स के दो तीन बड़े नाम ऐसे, ओबामा तो हम लोग जान रहे हैं, मतलब हैज बीन रीसेंट। हु एल्स? हाँ, तो इससे पहले आई थिंक वर्ल्ड वॉर के बाद से अगर स्टार्ट करें तो वर्ल्ड वॉर के टाइम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वाज द प्रेसिडेंट हु लेड अमेरिका इनटू वर्ल्ड वॉर, सो ही वाज अ डेमोक्रेट। उसके बाद ऑल ऑफ अस वुड नो कैनेडी, बिल क्लिंटन वाज आल्सो अ डेमोक्रेट, and then Obama, and now Biden. So I think largely these are the big names in Democrats. ठीक है। I'll just like to add वो 48 नहीं 1984 presidential election Ronald Reagan had won 49 states के electoral vote, so effectively it was a wipeout. आउट ऑफ टोटल कितने स्टेट्स होते हैं, मतलब आउट ऑफ 49 का डिनोमिनेटर क्या हो? 50 states 50 ओके, मतलब सारे ही जीत गए, मतलब 50 states. सारे। एक कौन सा था Yes, जो मतलब मिस कर effective गए wipeout. थे ये? नहीं 56 है टोटल। The only one, it's number 10, I don't know exact, Minnesota, which is north midwest. Yeah. ठीक है। अब थोड़ा इस इलेक्शन पे आते हैं क्योंकि अगले साल इलेक्शन होने वाला है, तो थोड़ा सा कि इलेक्शन से पहले, आई मीन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है जैसे देव ने शुरू में बताया, पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स अपने कैंडिडेट भी डिसाइड करते हैं, और उसके लिए एक प्राइमरीज होती है जो उनके आपस में होता है, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स के बीच में इंटरनल इलेक्शन होता है। इंडिया में ये नहीं होता है तो लोगों को नहीं पता है, बट वहां पे पार्टी के बीच में, पार्टी के अंदर इंटरनल इलेक्शन होता है जिसे प्राइमरीज कहते हैं, और उसमें जो जीतता है वो उस पार्टी का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनता है। ठीक है, तो अभी डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स में आई मीन कौन प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं, कौन कौन है, और उनकी क्या स्ट्रेंथ वीकनेस है, या कौन आगे चल रहे हैं, इस पे बात करेंगे। तो आई थिंक वैभव कैन स्टार्ट विद द रिपब्लिकन्स एंड आई थिंक देव कैन कैरी फॉरवर्ड द डेमोक्रेट्स। Right. So Republicans में I think the leading candidate right now is Donald Trump only. He is leading by lot of margins. Then Donald Trump again, like he comes with his own past. मतलब he has a big fan base in US. Still, when you look at how he was arrested, and when after bail he was moving, like there was a big crowd that you don't particularly see in, say, in your Biden's rally or Biden's and that assembled probably naturally. So Trump has a big support base. Trump ke baad somebody who's evolving pretty quickly, who came to number 2, is a person of Indian origin, Vivek Ramaswamy. So Vivek Ramaswamy he's more of a little radical thought. His point of view is that कि यूएस में अभी इंक्रीमेंटल रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, यूएस नीड्स अ रेवोल्यूशन, जैसा मतलब जैसा अब्राहम लिंकन या उससे पहले जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका बनाया, और फिर अब्राहम लिंकन ने
like he crushed the civil war. Now is the time to get into that revolution, and he's very clear on what his core principles are. So he's gaining some decent grounds. इसके अलावा I think Div can correct me if I'm wrong. There's this old vice president, again like very bad. एक महिला भी है ना? महिला is Nikki Haley, right? She's also of Indian origin. मतलब exactly Indian नहीं है. Some second or third generation with some other white, or but she's partly Indian, and she has been US ambassador to some work. Again, like I'm not very much aware of the details here. Is the US ambassador to the UN member? Yes. UN की US तो ambassador बिफोर थी। देव जी। के पास जाए वैभव, एक सवाल और कि ये ट्रम्प की जो फैन फॉलोइंग की आपने बात की कि बड़ी फैन फॉलोइंग है, वो फैन फॉलोइंग ट्रम्प के वजह से है या ट्रम्प जो आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं उस वजह से? दोनों चीजें मेरे ख्याल से। अगेन तो व्हेन यू मतलब इन जनरल दो फैन फॉलोइंग दुनिया में लोगों की होती है, तो दोनों चीजें की वजह से। सो देयर इज एन आइडियोलॉजी, लाइक इन इंडिया मोदी जी रिप्रेजेंट्स एन आइडियोलॉजी, Atal ji represented an ideology, Pandit Nehru represented an ideology, Indira Gandhi represented an ideology, and there's a leader that creates an aura that personifies that ideology. तो ट्रम्प के साथ दोनों चीजें हैं। पहली चीज है कि like after a long time there was somebody who took very strong stance on few issues. COVID में again like people may reject his COVID management, but like many of the right wingers believed कि mask जरूरी नहीं है, वैक्सीन जरूरी नहीं है। ट्रम्प वाज openly supporting that. तो मतलब he has taken an instance which is contrarian to many of old Republicans also, a more radical approach, which is why he's popular. Plus he has his own set of aura, मतलब अपनी fan following है, people love him for what he say, people love him for what he does in public. So it is a mixture of both. एक लास्ट सवाल वैभव, तो जैसे आपने बोला कि दो वजह से होती है, एक तो आइडियोलॉजिकल बेस्ड होती है और फिर उसके साथ एक आदमी पर्सोनिफाई करता है आइडियोलॉजी को। पर इसमें एक विषय होती है कि जब आप कोई आइडियोलॉजी को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, कोई यानी मोदी जी पर्सोनिफाई कर रहे हैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी को, पर उसको यदि बड़ा कोई पर्सोनिफाई करने वाला आइडियोलॉजी को आ जाता है, समवट लाइक योगी, तो पीपल के मन में एक अल्टरनेटिव होने लगता है कि दिस कैन बी ऑल्सो एन ऑप्शन। जैसे इंडिया में एक बन रहा है, आज बना नहीं है पर ऑब्वियसली एक बनता हुआ दिख रहा है। यूएस में भी ऐसा है क्या कि देयर इज समवन जो प्रोबेबली आज ट्रम्प को चैलेंज नहीं कर रहा, बट who personifies that ideology much more than the Trump, या at equal level of Trump, और हो सकता है वो पोटेंशियली वो मतलब एक फैक्टर बने अभी या आगे के इलेक्शंस में? Again, from what I see limited on my limited social media understanding, that person is this guy विवेक रामस्वामी। वो बिल्कुल आकर के ही outrightly says कि ट्रम्प ने जो किया 4 साल में बहुत था, किसी और प्रेसिडेंट ने नहीं किया, बट 4 साल में से 10x किया जा सकता है, और वो 4 साल में 10x मैं करूंगा। उसके इंडिया में जैसे योगी डजेंट हैव दैट इशू कि वो बाहर के हैं एंड ही रिप्रेजेंट, मतलब he is not from the breed that personifies that ideology. But Vivek Ramaswamy has that issue. He being a native Indian and Hindu guy, it is harder for him to say कि I represent this ideology. But from what I see, he is the one who is coming out and saying कि Trump का 10x करना है, और वो 10x ऐसे होगा, चीजों को इंक्रीमेंटली धीरे धीरे सुधार के नहीं होगा, चीजों को रेडिकली सुधार के होगा। जैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन या FBI, वो कहता है कि बंद कर दो, I'll shut them down on these of these are part of deep state taxpayers का पैसा जाता है, कुछ फायदा हो नहीं रहा है। ट्रम्प वाज कि उनमें रिफॉर्म लाना है, तो ही इज दैट पर्सन। ओके, आई थिंक देव के पास सकते हैं। देव, एनी कमेंट्स ऑन वैभव ने जो रिपब्लिकन्स पे बताया, उनमें आपका क्या विचार है, एंड देन यू कैन मूव अहेड टू द डेमोक्रेट्स। I have many comments. First of all, I think I'm just seeing there are 11 declared candidates right now. So people who declared their intention to be a Republican candidate, बहुत बड़ा field है। जो वैभव जी ने बोला, उसके अलावा I'd like to point की 3 more relevant people जो we should talk about: Ron DeSantis, Mike Pence, Chris Christie. तो Ron DeSantis is the current governor of Florida. He's a probable candidate. Mike Pence was the vice president during Trump's
presidential period. And then Chris Christie, he's not been an active elected politics पिछले I think 5-6 साल से, but he was वहाँ पे state in New Jersey, he was the governor of that state, and he's a primary Republican figure, especially pre Trump Republican Party जो है उसमें he was a very popular figure at that point. तो वो तीनों are also I think important people to talk about. In terms of what you said about Vivek Ramaswamy, serious candidate possible for many reasons. A, जैसे मेरे को लगता है यूएस में क्या होता है, when a primary starts, usually you have two kind of candidates, especially early time में, when primaries haven't started, but मतलब उथल पुथल चालू हो गई है, एंड उसमें दो प्रकार के मेरे को लगता है कैंडिडेट। बिफोर यू गो अहेड, एक बार थोड़ा ये भी बता दो ये प्राइमरीज कब होते हैं, हो रहे हैं, थोड़ा ये बता दो, फिर वी कैन कंटिन्यू कि अभी किस पोजीशन में हम। कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग में आपने बोला था कि यूएस में लार्जली जो नॉमिनी होता है वो इंटरनल एक पार्टी डेमोक्रेसी के बेसिस पे इलेक्ट होता है। तो लार्जली यूएस में ये सिस्टम है कि अगर आप एक पार्टी के नेशनल, आपको उसके हम बीजेपी को वोट करना चाहते हैं या कांग्रेस को करना चाहते हैं, चुनाव के दिन पे जाके अपने बैलेट पेपर वीडियो पे फ्रीज हो गया, बटन दबा के हम अपना वोटिंग इंटेंशन। हाँ, कैन यू जस्ट रिपीट अगेन, थोड़ा आपका कनेक्शन चला गया और आपकी साउंड भी कट रही थी, एक बार फिर से शुरू से बता दें। हाँ जी, कैन यू हियर मी नाउ? यस यस। ओके, सो इंडिया में हम लोगों को अगर किसी भी पार्टी को सपोर्ट करना होता है तो हमारा प्राइमरी तरीका ये होता है हम चुनाव के दिन जाके उस पार्टी के फेवर में वोट डाल के आ सकते हैं। हम लोग कोई हमारा पार्टी एफिलिएशन रजिस्टर नहीं करा सकते अपने वोटर कार्ड में, बट यूएस में आप अपना पार्टी एफिलिएशन रजिस्टर करा सकते हो, एंड द सेकंड यू रजिस्टर टू बी अ पार्टी मेंबर, यू कैन देन वोट इन देयर प्राइमरी इलेक्शंस, व्हिच इज पार्टी के अंतर्गत एक चुनाव होता है, उसके अंतर्गत आप अपने लीडर्स को चुन सकते हो। तो यूएस में जब आपको एक पार्टी का नेशनल कैंडिडेट बनना होता है फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, आपको उस कैंडिडेट को स्टेट पार्टीज में जाके अपने जो स्टेट में वो उसका ओपोनेंट है उसमें भी जीतना पड़ता है। तो यूएस में इन स्टेट इलेक्शंस को प्राइमरी इलेक्शंस कहते हैं, जो आप विद इन द पार्टी लड़ रहे हो। आप मतलब सरकारी ओहदे के लिए नहीं लड़ रहे हो, आप पार्टी में उस सरकारी ओहदे को लड़ने के लिए जो आपको कैंडिडेट जीतना पड़ेगा, जो हमारे पे टिकट बोलते हैं, जिसको टिकट लेने के लिए आप वो चुनाव लड़ रहे हो एसेंशियली। तो वो जो प्राइमरी प्रोसेस चालू होता है, व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि यूएस में जब प्राइमरी प्रोसेस स्टार्ट होना होता है तो दो प्रकार के कैंडिडेट होते हैं हर पार्टी में। एक होता है जो सीरियस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने की कोशिश कर रहा होता है, और एक होता है जो जो 2-3 सीरियस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है उनके वाइस प्रेसिडेंट बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। I think Vivek Ramaswamy is someone who's trying very hard to be Trump's vice presidential nominee, not necessarily a presidential candidate at all. क्योंकि VP वाला जो पोजीशन है that is less to do with जो आपको चुनाव जितवाएगा and more to do with a lot of other factors, right? कि this particular candidate might entice that small subset of group of people जो हमें वोट डाल देंगे. It's sort of like that. I think Vivek Ramaswamy is very much a मतलब होपफुल वीपी कैंडिडेट फॉर ट्रम्प, ही इज नॉट अ सीरियस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, एंड उसके बहुत रीजन है, बट आई थिंक एक बड़ा रीजन ये भी है जो एक रियल फैक्टर रियलिटी है यूएस में कि he looks like us. I mean, regardless of what we want to say, that is a big factor in the US. And I disagree with him on every foundational reason point he has to say. I think एक बहुत बड़ा important factor to understand ये है कि US का जो primary process चालू होता है national parties का, it starts in states like Ohio and New Hampshire. It does not start in states like California, जहाँ पे you have heavy diversity, you have minority voters, you have within the minority voters, you have also lots of different diverse sections within the US. So you're starting in states like Ohio, New Hampshire. New Hampshire is a proper white state वहाँ पे, right? It's a Caucasian state. तो and US like any other country in the world, आप जब एक चुनाव लड़ना चालू करते हो तो मोमेंटम इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आपने चुनाव लड़ना चालू किया, आप पहले अगर 4 प्राइमरी हार गए तो यू ऑलरेडी आप कुछ रन बिहाइंड आ गए, एंड जो नए चुनाव जीतता जा रहा है उसको ज्यादा फंड्स मिलते जाना चालू हो जाते हैं। तो आई थिंक ही इज द लीस्ट सीरियस कैंडिडेट पॉसिबल. ही इज ऑल्सो द वन कैंडिडेट हु इज योर
दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर मी। मतलब प्राइमरी चुनाव जो है वो मैं कैंडिडेट इलेक्ट हूं ना हूं, आई विल बिकम अ बिग लीडर विद इन द पार्टी बिकॉज आई हैव दिस मैसिव प्लेटफॉर्म। राइट, द सेकंड आप प्लेटफॉर्म के पार्ट हो जाते हो, यू गेट इनवाइटेड टू डिबेट्स, यू गेट इनवाइटेड टू टाउन हॉल्स, तो इट इज वन ऑफ दोस थिंग्स कि यू डोंट हैव टू प्लीड टू बी इनवाइटेड समवेयर, यू गेट इनवाइटेड बाय नेचर ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द कॉन्टेस्ट। बट आई थिंक जो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट दो मेरे को लगता है मेजर एक्चुअल प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं, दे आर रॉन डिसेंटिस एंड क्रिस क्रिस्टी। रॉन डिसेंटिस अभी थोड़ा सा डाउन लो पे है, बट रॉन डिसेंटिस वाज द गवर्नर ऑफ इज द गवर्नर ऑफ अ मेजर स्टेट। एंड जैसे इंडिया में व्हेन वी हैव इलेक्शंस, राइट, इट हेल्प्स टू बी पार्ट ऑफ, जैसे अगर आप किसी पार्टी के अध्यक्ष बनने की कोशिश कर रहे हो, तो इट हेल्प्स टू बी पार्ट ऑफ इन देयर जनरल सेक्रेटरी की लिस्ट। इट्स एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता ही है विद इन पॉलिटिक्स। तो यूएस में इफ समवन ट्राइज टू बी अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, it helps to already be a governor because आप already एक executive level system के पार्ट। coming to the Democrat list बहुत छोटी है आज की तारीख में। in terms of list, it means people who have already declared their intention to be a candidate, and वो list में बहुत simple तीन लोग हैं अभी। you have the incumbent president Joe Biden, and then you have two other candidates, Robert F. Kennedy and Marianne Williamson. Marianne Williamson is just Marianne Williamson is not even an elected member in the US, so it's a non-serious candidate. And Robert F. Kennedy is like a not a serious candidate. Democrats don't have any candidate; they're going to fight on the incumbent seat. The big change might be if Biden gets more sick, more ill if something happens. But there isn't a field right now. Democrats are likely going to fight with Joe Biden as their candidate, seeking a re-election. So yeah. ठीक है, तो एक साइड तो मोटे मोटी क्लियर है डेमोक्रेट्स में कि बाइडन इज द कैंडिडेट मोर और लेस। दूसरे में आपने ट्रम्प के दो कॉम्पिटिटर बताया, तो हाउ अहेड ट्रम्प इज, और क्या मान लिया जाए कि इट्स ऑलमोस्ट सर्टेन दैट इट विल बी अनदर ट्रम्प वर्सेस बाइडन बैटल? So I think Trump right now is definitely up ahead, just by fact, like simple factor of the fact that he was the president. तो नेम रिकग्निशन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अदर्स, राइट? मतलब आज अगर कोई भी पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट होगा, एक ओपिनियन पोलिंग होगी, तो ही विल ऑलवेज आउट परफॉर्म एवरीवन एल्स। He's also done something very smart, which is he's declared, I'm not going to go to any Republican presidential debates, which is him effectively saying that the Republican Party can do anything they want, but I don't see any of these people at the same stature as me, so I don't need the exposure. And I think knowing Trump in terms of how he has acted in the past 6-7 years, he will consistently, in the coming future, he will consistently schedule town halls right after these presidential elections. So he will take those same eyeballs, मतलब from a, अगर हम टीवी ऑडियंस के हिसाब से देखें, right after these presidential elections, and get that same audience to focus on him right afterwards. Presidential debates, right? Sorry, yeah, presidential debates. So he's very much up ahead in the field. But with Trump, a big reality is he is going through a lot of court cases right now in the US. So you don't know, क्योंकि you also have to understand the US is complex in terms of वहाँ पे states है, and every state has their own law, and every state party has their own bylaws, right? तो एक तो क्या state का actual constitutional legal framework, और एक हो गया उन parties का bylaws. तो if let's say he's actually अभी he's on bail outside, but let's say उसका trial start हो जाता है पहले, and if he's convicted, then there will be state laws where the party might not allow someone who is convicted to be on their state party ballot. And अगर वो स्टेट पार्टी के प्राइमरी में नहीं लड़ सकता है, तो उसको प्राइमरी वोट्स नहीं मिलेंगे। अगर उसको प्राइमरी वोट्स नहीं मिलेंगे, तो ओवरऑल उसकी टैली कम होगी, तो नेशनल कैंडिडेट नहीं बन सकता। तो यू डोंट नो, आई थिंक ओपन फील्ड है अभी इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। बट ट्रम्प राइट नाउ जस्ट पॉपुलैरिटी कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे देखें कि हु इज द मोस्ट पॉपुलर, आई थिंक ही इज द मोस्ट पॉपुलर, एंड आई थिंक ऑल द पोल्स विल सजेस्ट द एग्जैक्ट जो सेम। ट्रम्प के कॉम्पिटिटर रिपब्लिकन में, वो भी ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी कर सकते हैं कि कन्विक्ट हो जाए और ये नहीं लड़ सके और मैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन जाए, ये सब चलता है वहाँ? yes and no. So I'll just एक मैं बोलना चाहूंगा, जो 538 का recent poll of polls है, यानी कि वो सारे polls का एक
एग्रीगेट है, तो उसमें ट्रम्प राइट नाउ इज एट, इन टर्म्स ऑफ रिपब्लिकन प्राइमरी पोल्स में ट्रम्प 52% पे है, एंड डिसेंटिस जो सेकंड टॉप है उसमें, he is at 14%. So it's मतलब अगर 50%, is effectively the primary nominee already, but जो second trailing है वो उससे मतलब 38 दूर points दूर पीछे दूर है, तक कोई सेकंड पे नहीं है। दूर दूर तक कोई सेकंड पे नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये एक बार समझ लो कि पिछले 2 इलेक्शन जो हमने देखा है, तो एक में लास्ट बाइडेन नहीं जीता, उससे पहले ट्रंप नहीं जीता, तो ऐसा समझे तो एक डेमोक्रेट्स नहीं जीता, एक रिपब्लिकन्स नहीं जीता, ठीक है। बिल्कुल। तो द कंट्री है स्वंग मतलब, तो क्या फैक्टर्स रहे दोनों इलेक्शन रिजल्ट के, मतलब फैक्टर्स मतलब बहुत डीप नहीं जाना है, व्हाट वर द ब्रॉड फैक्टर्स, किस वजह से ट्रंप जीत गए और किस वजह से बाइडेन जीत गए, ठीक है। और क्या स्विंग फैक्टर है जो डिसाइड करते हैं ये इलेक्शन, और which way does that swing factor swinging this time? I think Div can start and Vaibhav can add the points. I think the big factor, of course, there were lots of factors, but I think the big factor is just voter turnout. So I think 2020 election में I mean we forget, right, अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे, so Trump's presidency was a very chaotic presidency, right? It was scandals after scandals after scandals, and जो एक बहुत बड़ा factor that was shown was कि जो ट्रम्प के scandals थे, that was not affecting the Republican Party a lot, like जो उनके Republican core base था उन पे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उन scandals से, but what it had a big impact was on कि it had a major impact on the Democratic base जो rallied and came out to vote in large numbers. So if you look at the 2020 election, the Democratic voter base voted quite heavily, and in the 2016 election, the Democratic voter base didn't vote as heavily. मतलब अगर आप देखोगे तो अगर एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट हो जाता है कि यूएस में you have two things, you have the popular vote and the electoral vote, right? The popular vote is the tally of all votes a candidate gets across the country, which is the vote share essentially. And electoral votes are basically आपने कितनी स्टेट्स जीती हैं, वेरी सिंपल। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें इसको, एमपी जीती है, यस, वेरी सिंपल, कि इंडिया में इलेक्टोरल वोट आपने कितनी लोकसभा सीट्स जीती हैं, एंड पॉपुलर वोट की टोटल आपका वोट शेयर कितना है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। तो 2020 में डेमोक्रेट्स वन द पॉपुलर वोट एंड द इलेक्टोरल वोट, ठीक है। 2016 was the first election in a very long time in the US, like after 2000, जहां पे the popular vote was won by Hillary Clinton and the Democrats, but जो electoral vote था, यानी effectively ज्यादा MP ट्रंप ने जीते थे, तो ज्यादा स्टेट्स ट्रंप ने जीती। तो even in the US 2016 election, Democrats lost because in some battleground states they could not drive as many voters to the polls. And 2020 में they were effective in that voter mechanism. They were able to drive more people to the voting booths because of a lot of chaotic years of Trump. And in that time, Trump, because इतने divisive लीडर थे कि जो उनका बेस था वो बहुत स्ट्रांगली उनके साथ था, बट इन द रिपब्लिकन पार्टी देवर सबसेट्स जो उनके बेस में नहीं थे, राइट? देवर ट्रेडिशनल रिपब्लिकन्स बट नॉट नेसेसरली Trump voters, but they were traditional Republicans. So they chose not to vote altogether. So voter numbers were down for them. And I think that was a big factor in this swing. मतलब ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है कि मुझे करेक्ट भी, कि यूएस इज एन एसेंशियली अ डेमोक्रेट कंट्री या डेमोक्रेट स्टेट, ठीक है। अब यह कि यदि डेमोक्रेट वोट करने जाए तो डेमोक्रेट ही हर बार जीतेगा, तो ये डिपेंड करता है कि डेमोक्रेट कितना वोट करने जा रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है रिपब्लिकन जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। इज दैट करेक्ट? आई मीन Yes, I agree with that, and I think there's a lot of data that showcases that. One big reason for that data is as well कि US is a very modern democracy, right? It's a modern economy, modern democracy, and it's highly urbanized. And in the US voting patterns, what they've largely seen is, and I think 2016 and 2020 दोनों के elections में है, I can pull up those numbers. Urban counties and urban cities are voting heavily in favor of Democrats, and rural counties and rural areas are voting in Republican favor. And just by the nature of modern economic system, more and more people are living in the cities in the US,
and that makes it a more democratic country. Democrat country. Democratic becomes more, well, anyway, but Democrat country than a Republican country. And Democrats का primary challenge ही ये होता है to bring more people to vote out. And if they can bring people to the voting ballots, then they win quite often. Well, your points to it. मतलब ऐसा समझ में आ रहा है कि जैसे हम लोग बोल रहे हैं यूएस इज अ डेमोक्रेट नेशन, मतलब डेमोक्रेटिक नहीं, मतलब डेमोक्रेट पार्टी के हिसाब से, तो ऐसा समझ में आ रहा है कि यूएस इज अ लेफ्ट लीनिंग नेशन, ये भी एक निकल के आ रहा है क्योंकि डेमोक्रेट इज अ लेफ्ट कंपेरेटिवली। बट हम तो देश में बैठ के समझते हैं कि यूएस इज अ राइट लीनिंग कंट्री एंड रशिया चाइना इज अ लेफ्ट लीनिंग कंट्री। तो मतलब पॉइंट एंड इस पे भी कुछ अपनी प्रतिक्रिया। एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, जो पॉइंट देवेंद्र ने बोला, वो है ट्रम्प के लास्ट वाले कैंपेन में ब्लैक लाइव्स मैटर ऑल्सो, दैट एंटायर मूवमेंट प्लेड अ लॉट ऑफ रोल इन दैट पोलराइजेशन। तो वो वैसा ही होता है, दिस इज जस्ट लाइक हाउ इट हैपेंस इन इंडिया। if there's a strong polarizing factor, then one particular, depending upon what kind of polarization it is, कुछ लोग ज्यादा वोट करने निकलते हैं, and then people like उस ideology वाले लोग, they win, end up winning the election. So Black Lives Matter probably was that galvanizing force that yielded into, मतलब Trump's last couple of years were bad, especially COVID and उसके बाद वाले, and this Black Lives Matter added added to that, and then they had to Trump finally ended up losing. So that they wanted to say. Sure. So to the point that US is essentially a democrat nation, yes, it has always been, मतलब अभी से नहीं, मतलब शुरू से, right from the days of George Washington, Democrats are the ones like जहाँ बड़े नेता निकले, जहाँ strong core support base है, and जो support base हिला नहीं है, and Democrats are pretty much popular among all races. Even among whites, Democrats have decent popularity. So एक जो one very interesting survey that I was reading somewhere on Twitter या कहीं social media पे, was that I'm again like never verified the authenticity of it, but was कि Democrats के साथ हमेशा so single white woman like they have a strong political affinity for Democrats for some reason, and they are the ones that may change the vote equation right now. So if you get more single white women to vote, Democrats are going to win. If you get fewer single white women to vote, Republicans may win. And I think, but to this point being कि Democrats by design popular होते जा रहे हैं because people are migrating more and more to cities and urbanization is increasing globally. तो उसमें मुझे the only counter thing that I see is कि what is also happening among few races in US is that they are turning, like for instance, Indians are turning a little more Republican. अभी वहाँ जो Indians हैं, large small section of blacks is also turning a bit Republican. तो I think वो दोनों तरफ हो रहा है. Trump in fact was the leader among Republicans who got highest number of Indian community vote or Indian diaspora vote. Indians typically vote for Democrats. वैसे ही ब्लैक के कुछ काउंटीज में there have been some bypolls or वो स्टेट इलेक्शन जो होते हैं वहां पे where Republicans did pretty good. So I think the switch is happening both way around. I'm not sure if we have numbers to quantify कि कौन कैसे बढ़ रहा है, but it is largely like उधर के कुछ लोग इधर जा रहे हैं, इधर के कुछ लोग उधर जा रहे हैं. एनी पॉइंट टू मेक? तीन चीज है. एक तो जो वैभव ने व्हाइट वुमेन थ्योरी बताई कि सिंगल व्हाइट वुमेन थ्योरी, कि सिंगल व्हाइट वुमेन थ्योरी आर द डेमोक्रेट सपोर्टर्स, तो इनी मतलब रीजन डेटा वाई. सो दूसरा जो वैभव ने बोला कि इंडियंस एंड ब्लैक्स आर बिकमिंग, जो डेमोक्रेट्स ट्रेडिशनली थे आज बिकमिंग मोर ऑफ रिपब्लिकन्स. व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? और थर्ड जो मेरी पॉइंट थी कि यूएस इज नोन एज अ राइट विंग नेशन, बट अभी हम लोग देख रहे हैं कि इट्स electorally it's a left party, मतलब relatively left party that wins the election. तो I mean ऐसा कैसे हो रहा है? I think मेरा बहुत क्विक
रिएक्शन टू जो आपका फर्स्ट पॉइंट था व्हाइट वुमेन वाला, यंग सिंगल व्हाइट वुमेन, I think a big reason for that is कि Republican policies are just dumb. मतलब I'm being very honest in the sense when I was growing up, college में I've been a libertarian my entire like college academic life. I used to run. I don't know अगर आप लोगों को पता हो कि नहीं हो, but F.A. Hayek was this foundational thinker in the libertarian movement, and libertarians are more Republican, whatever that means. So I used to run the Hayek Society of my university. So I'm as libertarian as I can get. But Republicans continue to have such dumb like policies. Just for example, something as simple as just pro-choice abortion. I think, and you have to understand this. कि जब आप मुझे वो बोल रहे हो ना, आई थिंक मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि जब आप ये बोल रहे हो ना कि यूएस इज लेफ्ट, आई थिंक व्हाट वी मीन बाय दैट इज कि द यूएस हैज बीन सच अ mature democracy for so long कि they've always had the capacity to have some sort of a welfare state. मतलब they've had a capacity. जैसे अब धीरे धीरे इंडिया is becoming more prosperous, right? Money के perspective से we are slowly becoming prosperous, and taxation is going up. Generally governments have more money to spend, so your infrastructure spend is up. You have big, just we've always had civil hospitals, right? But civil hospitals in India have always been overrun. उनकी capacity कभी थी नहीं. But you have now programs like Ayushman Bharat, Rajasthan में similar programs like Chiranjeevi and all of that, which are doing the same things. अगर आप एक सरकार हो, right, आप क्या करोगे? अगर आप mature होते जाओगे, बेसिक स्कूल बन गया है गांव में, बेसिक एयरपोर्ट बन गया है, ट्रेन स्टेशन बन गया है, तो व्हाट डू यू डू नेक्स्ट? यू स्टार्ट डूइंग मोर फॉर द पीपल. तो द यूएस हैज डन सिमिलर थिंग्स, राइट? एक गवर्नमेंट का रोल ही होता है. अगर आज मैं प्रधानमंत्री हूं भारत का, मैं तो चाहूंगा ना कि मैं अपनी पावर को बढ़ाऊं, और मैं कैसे बढ़ाऊंगा? आई विल मेक my capacity to give things to people more. Simple है. तो यूएस has been more mature in that process बहुत लंबे टाइम से. नहीं, पर बहुत लंबे समय टाइम से यूएस को, जो दुनिया की आप बात करते हो, वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हो, तो जो राइट विंग आप देखते हो या तो कैपिटलिस्ट का एपिटोम देखते हो, जो पाइनियर देखते हो, तो वो यूएस को ही मानते हो. और जो लेफ्ट की जब आप बात करते हो तो चाइना, रशिया, ये विंग को मानते हो. और दैट्स हाउ द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड या वो. आई थिंक इसमें ये है कि आपको लेफ्ट राइट दो एक्सिस पे देखना पड़ेगा. एक हो गया आपका इकोनॉमिक एक्सेस. तो द यूएस हैज बीन वेरी राइट व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक एक्सेस. दे बिलीव इन प्राइवेट ओनरशिप. उनको लगता है कि बिजली प्राइवेट प्लेयर्स को देनी चाहिए. जैसे अगेन मैं वापस, मैं जो उसमें कट गया था मेरा कॉल एक्चुअली, भारत में क्या लगता है? बिजली सरकारी होनी चाहिए, ट्रेन सरकारी होना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है यूटिलिटीज तो सरकार ही देती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे शुरुआत से यूटिलिटीज सरकार ने ही दी, राइट? वहां पे यूटिलिटीज हैव बीन प्राइवेटाइज्ड फॉर एज लॉन्ग एज यूटिलिटीज हैव एग्जिस्टेड, राइट? तो उसका बड़ा रीजन है कि हमारे यहाँ पे वो जो प्राइवेट एंटरप्राइज है उसका रोल इन इकोनॉमी इज लेस. वहां पे प्राइवेट एंटरप्राइज का रोल इन इकोनॉमी हैज बीन क्वाइट एक्सपेंसिव. तो वहां पे लेफ्ट राइट वाला जो है, यूएस हैज बीन कैपिटलिस्टिक फॉर अ वेरी लॉन्ग, एंड देव सॉर्ट ऑफ डिजाइन द मॉडर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम. अब जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट इज इट्स लेस अबाउट प्राइवेट एजेंसीज एंड ये सब. तो क्या होता है, मुझे लगता है हमको खुश करने की बात होती है. बट मॉडर्न कैपिटलिज्म इज अबाउट, मॉडर्न कैपिटलिज्म इज मॉडर्न कैपिटल, एंड दैट इज बैंक्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स. एंड वो अगर आप देखोगे तो जो फाउंडेशनल कैपिटलिस्टिक banks and financial systems, they're all based in the US, and they sort of became the primary financial systems of the world. तो वो वहां पे लेफ्ट राइट का वो होता है. पर जहाँ पे सोशल इश्यूज है वहां पे तो यूएस हैज बीन लेफ्ट एंड प्रोग्रेसिव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मतलब आप जैसे जैसे यू टेक समथिंग लाइक, जो यूएस के लेवल पे देखें, जैसे वहां पे अबॉर्शन इज अ पॉलिटिकल इशू, ठीक है, सोशल पॉलिटिकल इशू. वहां पे मैरिजुआना इज अ सोशल पॉलिटिकल इशू, ठीक है. तो यू हैव थिंग्स लाइक मैरिजुआना, जो रिपब्लिकन पार्टीज कोट एंड कोट like national level pe they might not be seen as the pro legalization party, and democrats might be seen as a legalization party. but अगर आप लास्ट आई थिंक यूएस के जो नेशनल ओपिनियंस है उसमें देखोगे तो आई थिंक कुछ 80% ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन इज प्रो लीगलाइजेशन ऑफ मैरिज. तो पार्टी प्लेटफॉर्म से कोई लेना देना नहीं आता है, राइट? यू लुक एट अबॉर्शन, तो द रिपब्लिकन्स आर द प्रो, like anti abortion, anti choice party,
and Democrats are the pro-choice party. But जो 2022 के मिड टर्म्स इलेक्शन थे, तो अगर एक चीज समझने की जरूरत है, यूएस में प्रेसिडेंट का इलेक्शन अलग से हो रहा है, और जो वहां की लेजिस्लेटिव बॉडीज है, राइट, जो प्राइमरी लोअर हाउस है, जो अपना लोकसभा हो गया उनका, जो जिसको वो हाउस कहते हैं इफेक्टली, जो हाउस ऑफ कॉमन्स टाइप उनका हाउस हो गया, वो वहां पे हर 2 साल में इलेक्ट एंड री इलेक्ट होता है, राइट। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद 2 साल बाद वहां पे इलेक्शन वापस हुआ, एंड जो यूएस का नेशनल अबॉर्शन लॉ था, क्योंकि स्टेट एंड सेंटर के साथ जो नेशनल अबॉर्शन लॉ था, वो डिपेंडेंट एक वहां का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था, उसके बेसिस पे वो लॉ क्रिएटेड था, विच इज बेसिकली जुडिशियल लॉ था। तो 2022 में इलेक्शन से ठीक पहले वो रो वी वेड जो है वो 50 साल बाद रिपील हुआ था, राइट। तो वो जब रिपील हुआ इन अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो यूएस का एक ट्रेंड है कि जो भी पार्टी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतती है लार्जली वो मिड टर्म्स में हारते हैं, and this was a very long time कि midterms में they didn't lose the upper house, they only lost seats in the lower house, the Democrats, and by a very small margin, and that was a large showcase of the fact that the US is also pro-choice. मतलब even Republican voters, Republican women ended up voting for Democrats, and if not voting for, they didn't come out and vote for the Republicans because they were not happy with Roe v. Wade being repealed अगेन। तो आई थिंक इसमें अगर इंडिया के लेवल पे देखें तो एक अच्छा एग्जांपल दिस इसमें आता है, समथिंग लाइक ईटिंग हैबिट्स, वेजिटेरियनिज्म एंड नॉन वेजिटेरियनिज्म। तो आज जब हम बीजेपी को देखते हैं, राइट, जो सेंट्रल बीजेपी को हम देखेंगे तो लोगों के दिमाग में आएगा कि सेंट्रल बीजेपी इज अ प्रो वेजिटेरियन पार्टी, राइट, फूड हैबिट्स में देखेंगे। बट अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, तो जो बीजेपी के कोर सपोर्टर्स होंगे वो भी सेंट्रल पार्टी के साथ वहां पे अलाइन नहीं होते हैं, right? That doesn't mean they're not BJP supporters. They are. They just don't align with what the assumption is. फिर वन स्टेप आगे जाते हैं हम, जैसे अगर इंडिया में हम लैंग्वेज को देखेंगे तो देयर इज अ लार्ज पुश टू मेक हिंदी एज अ प्राइमरी लैंग्वेज विद इन ऑल ऑफ इंडिया। तो अगेन देयर विल बी बीजेपी सपोर्टर्स इन द साउथ, इन द नॉर्थ ईस्ट, इन सेंट्रल इंडिया, जहां पे यू विल हैव रीजनल बीजेपी आउटफिट्स व्हिच माइट नॉट अग्री विद द नेशनल बीजेपी आउटफिट व्हेन इट कम्स टू हिंदी का प्रोपोगेशन अक्रॉस इंडिया। तो उस तरीके से देखोगे तो आई थिंक वहां पे भी वो सिमिलैरिटीज आती है। तो अगेन गोइंग बैक टू वो जो व्हाइट वुमेन वाला पॉइंट है, आई थिंक when it comes to a lot of social values, Republicans tend to have such, and I'm being honest in the sense, I think they've very old kind views on these. They're not people friendly policies, and that is now being reflected in their elections. And I think एक reason हो सकता है, someone can argue, right, कि अगर people friendly नहीं है तो why don't Republicans जिता? And I think that then comes from funding. I think if we have to look at how American elections are funded, and America में a lot of Republicans will have large funding coming from religious Republicans. And religious Republicans still happen to be anti-abortion, anti-marijuana, and they, in a bid to raise more funds for Republican candidates and Republican issues, जो National Republican Party है, that continues to have views around all of these issues which aren't necessarily aligned with popular opinions. So एक आपका था white women, जो आपने वो इलेक्टोरली लेफ्ट था, तो वो भी मेरा उस पे वो था कि इट्स आपको दोनों एक्सेस पे देखना पड़ेगा। मतलब अगर इकोनॉमिक एक्सेस पे देखो तो वो लेफ्ट राइट है, बट जब आप पॉलिटिकल एक्सेस, सॉरी सोशल एक्सेस पे देखते हो, दे आर लार्जली लेफ्ट, दे आर मोर प्रोग्रेसिव इन दोस टर्म्स, दे हैव आल्सो हैड मोर प्रोग्रेसिव फाइट्स इन दोस टर्म्स। या ओके, कूल, गॉट इट। वैभव, अब लोग लास्ट पेज में चलते हैं, तो वैभव, इफ यू हैव एनीथिंग टू रिस्पॉन्ड टू देव, क्योंकि देव ने जो बोला है रिपब्लिकन्स आर डम। वन सेकंड वैभव, बिफोर यू स्टार्ट, वन इज वन, एनी रिस्पॉन्स? दे हैव डम पॉलिसीज समटाइम्स। हाँ, ओके, कूल। एंड सेकंड, आफ्टर रिस्पॉन्डिंग टू देव विल मूव टू कि क्या लग रहा है 2024 में अपनी देश की तो बात करेंगे कभी और, पर यूएस में क्या होता हुआ दिख रहा है और क्यों होता हुआ दिख रहा है? यस, गो अहेड। So to your point about US being the flag bearer of global capitalism and still naturally leaning left, so I think US left is also for rest of the world right, at least economically. Republicans or Democrats दोनों like both are pro capitalism. Democrats बस एक level पे they want some state control of how big organizations behave, especially after ये जो fan companies and they are controlling internet. So Democrats want a say in that कि क्या करना है क्या नहीं.
a little anti-free speech from what I personally feel. But yes, in general, like if you look at both their policies around monetary policies and fiscal policies around fiscal measures, they are largely same. Like इंडिया में जैसे वेलफेयर दोनों कांग्रेस बीजेपी दोनों का, मतलब सरकार के पास पैसा है तो सरकार वेलफेयर मुफ्त में चीजें बांटेगी, वहां भी वैसे ही, मतलब बैंक्स और फिजिकल के अराउंड both have similar line of thought. To Dev's second point being about Republicans' policy being dumb, yes, few of them definitely. मतलब I personally also believe कि choice वाली policy, like repealing the Abortion Act wasn't a like thoughtful decision. वो anyway, that was something done by judiciary and not by a presidential order, or not by the legislature there. Few of their policies are also little uh, old school. Gun laws के around their things are again, it leads to a lot of shootings and everything. But again, like as Dev said, political funding पे depend करता है. So from what people talk about, and like from what I have learned over years, Democrats are largely like old Christian plus thoda arms wali lobby. They are the traditional big funders of Republicans, and big pharma and like all these nicotine and cigarette companies, they are like big backers of Democrats. तो दोनों की पॉलिसी थोड़ी उसके हिसाब से भी चेंज होती रहती है. 2024, again, like it's very early, but from how things have panned out after Trump lost in 2020, it is going to be a Democrats election largely, unless Biden fucks up big time. So I think that it is going to be a Democrats thing all the way. एक चीज I'd like to add on, जो वेब जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट पहले रेस किया था, मेरे ध्यान से निकल गया था, कि जो वी आर नाउ सीइंग माइनॉरिटी कम्युनिटीज लाइक groups of African Americans, groups of people of Indian origin, now also people who would traditionally always vote for Democrats now voting somewhat in Republican favor. I think uska ek bada reason is also taxation. I think a lot of these communities now have wealth built up. Like if you think about it, modern America mein wealth creation is now like what you have second generation Indian origin people, you have uh, second generation African Americans who can also vote, because you have to understand, like African Americans have been an integral part of the American story, but they've become politically empowered in the last 60-70 years. So उस politically empowered African American population की भी second generation हमारी है. So they've now started making money. They have wealth that they want to protect. And वहां पे वो taxation वाला part बहुत बड़ा आता है कि large level पे देखो तो Democrats are pro heavy taxation on the mega rich, or not just mega rich, like just millionaire level पे they believe in higher taxation, they believe in inheritance taxes, and Republicans don't. And sometimes आपकी political opinion कुछ भी हो सकती है, but you also think on the lines of कि now I am making a large chunk of money and I don't want to pay large taxes. And you have these minority groups who now have wealth built up, and they now support Republicans more. They are starting to support Republican policies because they believe in the simple reality that they want to pay less taxes. So I think वो taxation एक बहुत बड़ा part है in how you have these communities moving right way. जहाँ पे वो again जो अमेरिका हैज ऑलवेज बीन राइट विंग वाला जो राइट है, जो इकोनॉमिक राइट आ जाता है टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. 24 में क्या होने वाला है देव? सॉरी, 24 में क्या होने वाला है? आई थिंक आई कंकर विद वैभव जी की इट्स अ डेमोक्रेट presidential seat unless Biden really messes up. I think the big thing to look out for will be who gets to control the House and who gets to control the Senate. क्योंकि I think the Democrats are, and again I think because we are trying to also quickly identify, तो जब US में election चलते हैं तो you are voting for a president, you're also voting for your local house, and then there will be also some Senate seats up.
तो डिपेंडिंग एक आदमी इलेक्शन बूथ में जाके दे माइट बी वोटिंग फॉर 3-4 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कैंडिडेचर. तो I think the campaign, or I think the big political question is how much are Democrats able to take control of the House and retain control of the Senate, and how much Republicans are able to regain control of the Senate and retain control of the House. Because I think Democrats have this unique position right now where they have a candidate who they are balanced on. There is no great love for Biden and there is no great hate for Biden as well. Right? There will be sections who really dislike him and there will be sections who really like him. But largely, वो बहुत ही balanced candidate. He does not inspire confidence or anything, or he does not inspire hatred as well. ठीक है? On the other hand, जो primary अभी मतलब foundational figure है, Trump inspires love and also hate, right? So that can make your election very divisive. That can make your election very polar. You can have Trump, जैसे अगर if Trump is convicted and he's still allowed to fight, imagine the Democrat turnout. It will be intense. Okay? But also imagine the Republican dip. Like you will have traditional Republican voters who have voted for George Bush, Ronald Reagan, George H. Bush, who will vote for Mitt Romney, Chris Christie. They will not want to go push a button for a convicted person, right? क्योंकि उनके दिमाग में Trump already did a lot of things they wanted to happen, which is that he already got the unique chance to appoint a few more Supreme Court judges uh, than other presidents have. तो वो हो सकता है वो बैलेट वो अंदर जाए इलेक्शन रूम में and they might not vote or they might spoil their presidential vote, but they will still vote for the House and the Senate, right? Because they want control of House, they want control of Senate. So I think Democrats have this unique position. They can control all three branches. And if they control all three branches, sorry, two branches, but three levels. But if they control all three, so 2024 to 2026 can be a super Democrat era, which is what 2008 was. If you remember, the first Obama के first 2 years there, when they could achieve a lot, which is achieve in terms of their agenda, of course. तो एक चीज जस्ट बिफोर वी कंक्लूड कि एक तो दोनों लोग बोल रहे हैं कि इट्स बाइडन टू विन, मतलब ऑल हैंड्स डाउन मोर और लेस. तो इसकी रीजंस क्या है, क्यों ऐसा दिख रहा है कि बाइडन इज मतलब फेवरेट बाय अ लॉन्ग वे? तो व्हाट्स द रीजन फॉर दैट, नंबर वन. और सेकंड पॉइंट ये है कि अभी भी मतलब क्योंकि इंडिया में ओपिनियन पोल चल रहे हैं, मोदी जी जीत रहे हैं, तो वहां पे भी ओपिनियन पोल चल रहे होंगे. वो अभी क्या परसेंटेज दिखा रहे हैं बिटवीन, आई मीन वो तो अभी क्या परसेंटेज चल रहा है, और आई मीन व्हाई, व्हाट्स द रीजन दैट बाइडन इज ऑल सेट टू विन? आई थिंक देवन, आई थिंक देन वी कैन कंक्लूड. So I think I'm sticking to 538 because they do good poll of polls for the US. So the thing is कि अभी तक proper polling it will be hard to come across क्योंकि you don't have declared candidates yet for the Republicans. And अभी तक रिपब्लिकन फील्ड इतना सेटल नहीं हुआ है. बट आई थिंक एक चीज दैट इज इंटरेस्टिंग टू लुक एट इज यूजुअली हाउ पॉपुलर एंड अनपॉपुलर जो बाइडन इज, राइट? कि एक तो होता है कि आप अपने कैंडिडेट मतलब अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट क्या कर रहे हो, और एक होता है कि सिर्फ आप जस्ट एज अ प्रेसिडेंट आपका एक अप्रूवल रेटिंग निकाली जाए. तो जो आई थिंक 538 का पोल ऑफ पोल्स है जो आई थिंक 25 अगस्त का दिखा रहा है, यानी कल तक का वो दिखा रहा है. तो बाइडन की अप्रूवल रेटिंग इज 41.4%. ठीक है, विच यूर ऑन म्यूट. ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग क्या थी जब वो चुनाव हारे थे? तो इफ यू कैन गेट अ सेंस की क्या अप्रूवल रेटिंग पे चुनाव हार जाते हैं लोग. यस यस यस. तो ये एक अच्छा फैक्टर है टू अंडरस्टैंड. सो बेसिकली ट्रम्प was Trump की अप्रूवल रेटिंग was 38% at this point, 34, 37, 38%. जहां पे अभी also you have to look at it this way, जो I think important to understand है. आप अगर यूएस को 50-50 में बांट, राइट,
तो what you are looking, अगर if I am an American president and मेरे को अगर 41-42% आ रहा है, तो what that means is कि मेरी जो population है 100% अगर डेमोक्रेट है, तो उसमें से 80 तो मेरे फेवर के अभी भी, राइट, एंड बाकी मेरे अगेंस्ट है. तो यूएस में ड्यूरिंग एन इलेक्टोरल टाइमलाइन अगर आप अबव 50 जा रहे हो, तो आपने फोड़ दिया है इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल, क्योंकि यू नाउ हैव द अदर पार्टी ऑल्सो लाइकिंग यू. ठीक है, अप्रूवल रेटिंग अबव 50 इज हार्ड इन द यूएस. एंड इसका अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, तो जो जॉर्ज बुश was above that figure for a very long time, and उसका बड़ा reason था because of the Iraq war and because of the September 11th attacks, which made him this big folk leader in the sense of कि the whole country was rallying कि we are just with the president right now. ठीक है, Clinton was popular for a very long time, Bill Clinton above that number. डोनाल्ड ट्रंप के अगर आप नंबर्स को देखोगे, तो ट्रंप, एज आई सेड, ही वाज इन दैट 38-37%. 38 जब इलेक्शन पे गए तब थे, या 38 इलेक्शन से एक एट साल दिस पहले टाइम, थे? मतलब आज जैसे कंपेयर कर रहे हैं मतलब ट्रंप इलेक्शन के, माइनस 1 ईयर अप्रॉक्स? नहीं, इलेक्शन माइनस 3 इयर्स, सॉरी, इलेक्शन प्लस 3 इयर्स, हाँ यस, हाँ, माइनस मतलब 1 ठीक ईयर, है. करेक्ट. हाँ, हाँ ठीक है, इलेक्शन माइनस 1. अपकमिंग इलेक्शन माइनस 3 ठीक इयर्स, है, करेक्ट. पर जब ट्रंप लूज किए, आई मीन, तो हाँ, ट्रंप कितने पे थे? कैन वी गेट एनी फिगर, मतलब जब वो 38.4 इफेक्टिवली. 38.4, तो हाँ, अभी आप बोल एंड रहे हो इसका एक ट्रंप. रोनाल्ड रेगन, विल गो बैक टू रोनाल्ड रेगन वन टाइम के लिए. हाँ, रोनाल्ड रेगन इन हिज 4th ईयर had a 61% approval rating, ओके. so आई which थिंक आगे, means he was. हाँ, आगे नहीं जाते हैं. मतलब अभी आप बोल रहे हो कि बाइडेन का 41% चल रहा है, राइट? 41.4 कल तक. यस, यस. सो आई थिंक 3% डिप इन हिम माइट पुट हिम इन अ डेंजर जोन. Yes. ओके, ठीक है. कमिंग टू द रीजंस, क्यों लग रहा है कि इट्स अ बाइडेन स्वीप दिस टाइम, एंड आई थिंक देन वैभव कैन ऐड एंड देन विल कंक्लूड. Where did you want to go? हाँ, तो ऐसे देखें इंडियन पर्सपेक्टिव से, तो दिस इज अ 2009 का चुनाव. ज्यादा शोरगुल नहीं है, और बाइडेन वांट्स इट दैट वे कि हम शांति से कर लें. कुछ चीजें हैं जो कि काम कर रही हैं उनके लिए, उनके कोर वोटर्स के लिए. कुछ चीजें हैं जो कि उनके कोर वोटर्स को थोड़ा और एंटाइज कर सकती हैं, जैसे ट्रम्प का कन्विक्शन है दैट, लाइक, एंड इफ ट्रम्प इज द प्राइमरी ओपोनेंट, देन again, as US being a primary Democrat पार्टी, तो लोग आएंगे और लोग ट्रम्प के अगेंस्ट वोट करेंगे. तो एंटाई वोट फॉर ट्रम्प विल लीड इनटू बिडेन. तो एक ये है कि मतलब दिस इज अ लिटिल साइलेंट इलेक्शन अभी तक, जैसा जो दिख रहा है. एंड बाइडेन वांट्स इट दैट वे, which probably we will see in India as well next year. And this always helps the incumbent. तो एक रीजन ये है. दूसरा, वो कुछ पॉलिसीज, लाइक द अबॉर्शन थिंग इज स्नोबॉलिंग. मतलब लोग अभी भी बात करते हैं, और मतलब दैट इज एक्चुअली हर्टिंग अमंग वाइट्स एज वेल. तो वो दूसरा रीजन जो मुझे दिख रहा है वो है. तीसरा, थर्ड रीजन इज दैट कि with all Russia attacking Ukraine and Democrats and like Biden largely rallying after Ukraine, वो थोड़ा वार हीरो वाला भी सेंटिमेंट आ रहा है, जो कि प्रोबेबली बुश के साथ था. तो ये तीन और प्लस छोटे मोटे और भी रीजन होंगे, which is why like it seems Democrats largely that will have the upper edge. आई थिंक देव, बिफोर यू एट द पॉइंट, मतलब वैभव ने एक बहुत अच्छी एनालॉजी ड्रॉ की 2009 इंडियन इलेक्शन से, मतलब बहुत क्लियर हो रहा है. तो मतलब यही समझ में आ रहा है कि ऑपोजिशन में अडवाणी है, ठुके हुए बंदूक हैं जो ऑलरेडी, तो ट्रम्प भी उसी पोजीशन में है कि हैव बीन देयर ओकेइश, मतलब कोई वैसा नयापन नहीं ला पा रहे. और जो इनकम्बेंट है उनकी कुछ पॉलिसी, मनरेगा, इस तरह की कुछ पॉलिसी है जो हैव बीन डिसेंट, वेल इनफ, और कोई बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं है सरकार से, तो है कि इनकम्बेंट निकाल ले जाएंगे. बट दैट ऑल्सो पेव वे फॉर अनदर 5 years जब मोदी इमर्ज होते हैं. ठीक है, तो कैन यू सी सिमिलर लाइंस इन यूएस एज वेल? नहीं, I think that's a very good, that's an apt comparison. And मेरा just, I'll bring it down to my state for just a minute.
तो आई थिंक आपके व्यूअर्स तो इंडियन पॉलिटिक्स में तो बहुत ज्यादा ही सक्रिय होंगे। तो अगर आप राजस्थान के स्टेट इलेक्शंस को देखो, राइट, तो राजस्थान के स्टेट इलेक्शंस हैव लार्जली बीन अ swing sort of state. But this year, this election, the upcoming election, after a very long time, uh, there is a general sense कि कांग्रेस हैज अ चांस। नहीं तो हमेशा क्या होता है कि लेकिन ये सरकार तो जाएगी, right? There's this Rajasthan has always had this incredible need for change every 5 years. Like Rajasthan is the anti-incumbency state, right? And I think Rajasthan is now in that place where there isn't particularly great love for Gehlot. There is no hate. There are some policies that are working, Chiranjeevi and all of that. At the same time, the opposition has no real, right? You have Vasundhara ji, who's not Who is necessarily Advani or Trump? Sorry? Who resembles Advani of 2009 or Trump of 2014? I mean, yes. So you have old. Vasundhara ji, yeah. तो राजस्थान में भी मैं वो ड्रॉ कर सकता हूँ। एंड आई थिंक मेरे दिमाग में वो इसलिए भी हिट हुआ था कि जो आई लाइक टू से समथिंग जो एक बहुत ही large politically talked about point nahi hai across the world in any sections of the world. We are not talking about COVID as a fact, ठीक है? But I think deeply हर परिवार में दुनिया में COVID का कोई ना कोई context है, right? COVID had an impact on every family across the world. Someone had a family member passing away, someone had close friends passing away, some people had मतलब family members who have now since क्या बोलते हैं had COVID didn't pass away but severe problems. Then there was the simple reality of economics. The COVID changed the economic reality of a lot of households across the world. India ho, US or UK ho, kahin pe bhi, it does not change the fact. And I think when I look at Rajasthan, Rajasthan had, in terms of everything else, Rajasthan didn't have that bad of COVID management. So wo Ashok Gehlot ji ke favor mein kaam aata hai. When you look at the US, even though we don't talk about it a lot, the US had terrible COVID management. And there will be families which might be Republican, Democrat, whatever, we don't know. But they will have that COVID, subconscious में वो COVID management इंसान भूलता नहीं है. Right? If you had something happen. And Trump was the COVID chief at that point, right? So that I think has an impact. That's not something we talk about a lot. That's not something media is talking about a lot. But COVID management, because people lived through it, it's very simple, right? So I think उसका भी impact होगा. So yeah. तो मतलब निकल के तो आयुष यही आ रहा है कि बिडेन जीत रहे हैं। हाँ, एक तो आपको क्या लग रहा है इसमें कि कौन जीत रहा है? यही नहीं निकल मतलब मैं तो ऐसा हूँ आइडियोलॉजिकली कि मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि बिडेन फिर से जीत सकता है। हाँ तो हाँ मतलब वो मतलब ये जीत भी जाए तो लगेगा कि गलत हुआ है। तो मतलब मैं तो उस मेरे को मैं एक ऐसे ही मतलब नहीं जीतना चाहिए उससे। he doesn't deserve to win. You don't have to have reason for everything. नहीं, but what do you mean by he doesn't deserve to win? Like from your perspective, let's say, ऐसा क्या ट्रम्प या फिर रिपब्लिकन्स have? Because जैसे I'll tell you something, मैं इंडिया के perspective से देखूं तो I think the Republican Party has been incredibly anti-Indian for a very long time. ठीक है, they can put Vivek Ramaswamy up there, but the simple reality is H1B visas were not being given during that time. The simple reality is कि Trump का recent, he's been quiet for a very long time. The first comment that he made was, I will put bigger tariffs on India because he's trying to make it anti-India, anti-China rhetoric within his own country. On the other hand, you had Biden, who's more supportive towards the Indian diaspora. He has upped the H1B quotas. So I like from an Indian perspective as well, Trump was a horrible president. When you think about it, एक और factor जो people have completely forgotten, which I think is a very important factor. अगर आपको याद हो 2015-16 में there was a very big treaty जो Obama pushed थी, was the TPP, the Trans-Pacific Partnership, right? TPP was supposed to be the large economic partnership framework that would counter China. Okay, TPP would have created an economic exclusive zone within the US and 26 other Pacific nations that would have incredibly empowered nations like Vietnam, Malaysia, and all these other Philippines and Taiwan and all these places, which would have meant that China would have had to break. But the second Trump was elected, the first thing he did was he spoke out against and उसने TPP को पूरा derail कर दिया, which meant was
China has had such a resurgence and yeah, I think we can all agree, right? In the last 6 years, 7 years, China has had an incredible resurgence to the point where China is an equal member to the US. And if you are India, would you want China to be an equal member to the US, China to be as dominant as player as it exists right now? Or do you want China to be a member which we can catch up? And again, if you look at Republican and Democratic policies, they will both be in favor of India being a relevant member. But if you look at Trump policies, he's an idiot. उसको उसकी कंपनी को जो ज्यादा पैसा लाके देगा, चाइना लाके देगा, वो बोलेगा ओके चाइना ग्रेट, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें बोलते ना इंडिया के अंदर घुस के ले लेने तो लो ना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है. तो फ्रॉम अ चाइना perspective, TPP would have empowered India immensely. But what TPP के removal did was it empowered China to a point which is immense. So yeah. So अभिमन्यु, आप 2 लाइन में ये बताइए कि आपको क्यों लग रहा है कि ट्रम्प जीतेगा? नहीं, मुझे यूएस इलेक्शन का बहुत कम पता है. हाँ, मतलब और वही. हाँ, अगेन जो दिव ने 5 मिनट बोला, मैं हाँ, उसको 2 लाइन में बस रिस्पॉन्स करूंगा. हाँ, ठीक है, दिव ने फैक्ट्स की बात की. हाँ, ठीक है, हम इमोशंस वाले लोग हैं. ठीक है, मैं फैक्ट समझ में आती नहीं है. अब हमने जब डिस्कशन शुरू किया तो हमने 3 नाम जाने थे, डेमोक्रेट से, रिपब्लिकन से. ठीक है, तो 3 नाम जब आया, रोनाल्ड रेगन का आया, जॉर्ज बुश का आया, ट्रम्प का आया, अपनापन लगा. ठीक है, जब दूसरा नाम आया, जब ओबामा का आया, बिल क्लिंटन का आया, तो अपनापन नहीं लगा. अब इसके कोई रीजन नहीं. ठीक है, ठीक तो है, अब एक वो कोई रीजन नहीं है, ये बस इमोशन है, मतलब है तो है. अब मेरे को भी लगता है कि मतलब पता नहीं है, वो तो बहुत ही थोथा वो है, लेकिन कि ट्रम्प जीतना चाहिए है या फिर जीत सकता है. वो क्यों लगता है? क्योंकि मजेदार पर्सनालिटी है. मतलब इधर जो सामने बैठा है बाइडेन, बोरिंग पर्सनालिटी लगता है. तो आदमी देखना चाहता है कि मजा तो आए. अब ऐसा आदमी आ गया है जो कि मजा ही नहीं आ रहा है, तो फिर फन हो. हाँ, तो लाइफ शुड बी फन. ठीक है, फैक्ट्स हैं, वो आगे बढ़ गया, पीछे गिर गया, वो सब ठीक है, लेकिन एक मजेदार चीजें चल रही. पर आई थिंक देव ने जो पॉइंट बोला, एक हम लोग अच्छा डिस्कशन इस पे कर सकते हैं कि यूएस इलेक्शन या यूएस के डेमोक्रेट रिपब्लिकन से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होता है. ठीक है, आई थिंक उस पर एक अलग से डिस्कशन कर सकते हैं कि यूएस का इलेक्शन से इंडिया और इंडिया पे क्या होता है. तो आई थिंक वो विल कीप इट फॉर सम अदर डे, जिसपे हम लोग ये डिस्कशन करेंगे. एक मेरा यस मैं इसमें इंटरजेक्ट करना चाहूंगा कि आयु जी का जो एक पॉइंट ऑफ फन वाला, तो बाती जी आप बिहार प्रदेश से आते हैं. जस्ट फॉर फन, वुड यू वांट लालू यादव एंड हिज किड्स टू बिकम मोर एम्पावर्ड बिकॉज इट इज फन? वो मजे करते हैं. लाइक जस्ट थिंक अबाउट इट, डोंट सेंस कि फन तो क्या है. फन तो बहुत वो है कि मतलब राहुल गांधी को बनाएंगे तो बहुत फन तो आएगा ही अगर उसको प्रधानमंत्री बना देते हैं, राइट? फन तो मोदी जी में बट ही देन है. देयर इज फन तो मोदी जी और केजरीवाल में ही है. नहीं. अगर आप अब फन को रीडिफाइन कर रहे हो, आप फन को अपने पर्सनल प्रेफरेंस से रीडिफाइन कर रहे हो. नहीं, अगर आप तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में कहेंगे तो हम कहेंगे कि तेजू भैया को बनाना चाहिए, क्योंकि वहां पे ज्यादा, और इसलिए भी कहेंगे कि तेजू भैया स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के एनरोल्ड स्टूडेंट भी हैं. मैं तेजू भैया को, आई एम नॉट डिमीनिंग हिम और एनीथिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूं. तो मैं कह रहा हूं अगर आप फन वाले पॉइंट से बोलो, नाउ यू आर कंपेयरिंग तेजू भैया टू a Sushil Modi or Teju Bhaiya to whatever, a Nitish, in terms of leadership. So yeah, I think Vaibhav makes a point. The only problem with Democrats is that Democrats के कुछ supporter they are radical left. अगर देखोगे तो a lot of them support Pakistan. A lot of them have traditionally have anti-India stance on Kashmir and have been very vocal across things that are our internal matters, which is what I don't like about Democrats. भैया India is a sovereign nation capable of handling things on its own, and Kashmir is an internal matter. As an Indian, I feel that the only I am with the government instead. The only part of Kashmir that should be talked about is the one which is illegally occupied by Pakistan. So that is one very strong reason, which is why which makes me anti-Democrats at times. Democrats have been pro-India, like historically, traditionally, Democrats have been pro-India. They have been pro migrants, they have been pro भाई skilled worker लाओ जो जिससे इंडिया का काफी फायदा होता है, मतलब जिससे we also can be one of those direct beneficiaries. यूएस में जाके you can earn money. But this is one thing that I am particularly which makes me Democrat hater at times. But I think you are focusing on
बोलते ना individual members and not the party. जैसे for example, the current the current Democrat elected party in the US has been a supporter of the G20 in India, right? They had no problem with that Kashmir visit as well. Okay, they've generally been more pro-India than pro-Pakistan. And then you had Ro Khanna visiting recently, which was he's a Democratic elected representative, very much in line with the Indian agenda. But at the same time, it's a massive party, right? You will have 15 people who will have different opinions. At the same time, Republicans may you have. I'm saying Republicans have also been pro-India in the recent years, right? Both Democrats and Republicans were pro-Pakistan 30 years back. Jab it supported their national process, right? Afghanistan and everything. Now when they see China as their primary opponent, they see India as a better partner in that future. So even Republicans are pro-Indians. It's Trump that is बोलते हैं ना the divisive factor. मतलब आज अगर के साथ बस दिक्कत है कि ट्रम्प इज आज अगर मिट रोमनी हो, राइट, अगर मिट रोमनी हो या फिर even someone like Ron DeSantis or Chris Christie, I think I see them being more pro-India than ever pro-Pakistan. But when I look at someone like Trump, Trump will be like, Saudi Arabia is giving me more support to my kids' retirement fund, and Saudi Arabia wants me to be more pro-Pakistan in a few things. वो हो जाएगा. At the same time, he'll be like, ban all Muslims in America. So I think the reason I dislike Trump, right, and I'm not saying, and I'm saying this, I don't dislike any other candidate in general, but the reason I dislike Trump is because I think Trump has no view, right? Trump is like my, बोलते ना, Trump is like me when my nani gives me 2000 का नोट, right? अब तो मोदी जी बंद कर चुके हैं, 500 के 4 नोट. I'm like, अभी I like my nani because 400 2000 रुपए मिल गया फ्री के. तो Trump is like that. He has no foundational वो view. तो ठीक है, वो कहाँ है? हिलेरी क्लिंटन कहाँ है आजकल? यार मैं भूल गया, मुझे मेरी हिलेरी 2008 वाली कैप पहननी थी, मुझे मिली ही नहीं यार. पर है कहाँ हिलेरी क्लिंटन? इज पॉलिटिक्स एंडेड और मतलब वो रेस में है, क्या है? नहीं, आई थिंक हिलेरी क्लिंटन नाउ एक्ट्स एज अ मैसिव कॉन्डुइट इन दैट, जो आपने वो जोन बोला था ना, वो वाला सबसेक्ट बोला था वैभव जी, जो young white women, single white women rallying that vote for Hillary Clinton is going to be a large part, right? If you look at the मतलब election, हिलेरी क्लिंटन चैलेंजर नहीं है डेमोक्रेट में? नहीं, not a challenger. क्यों? Because she's not declared any intention to fight again, and I think she's done in terms of, it's like, is Rajnath Singh a challenger now? Of course he can be, but is he a challenger right now? I think you have a better grasp of that. Just for example, also, if you are BJP, would you want to fight an election without Rajnath Singh? आई थिंक मेरा है कि यदि भाजपा में प्राइमरी होती तो हो सकते थे वो चैलेंजर होते. अब प्राइमरी होती ही नहीं है तो फिर ऑप्शन ही नहीं है उनके पास. अगर भाजपा में होती और वो 2009 में भी हार चुके होते और 2014 में भी हार चुके होते, तो क्या अभी भी वो अपने आप को वो कैंडिडेट मान रहे होते, इन नोइंग मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी ऑलरेडी इन द फ्रे? अडवाणी जी तो 2014 में तो चाह रहे थे ना कि अडवाणी जी 2009 में हारने के बाद 2014 में चाह तो रहे थे ना. That's where we are all saying ना कि I believe कि Rajnath Singh and Hillary Clinton are both realistically mature leaders who understand their place in politics and capitalizing all the realities they have. Okay, cool. Well, any point to make, or else we'll end it. I think it's been a long discussion now. No, that's all. I think एक डिस्कशन हम लोग रखते हैं जो अभी आई थिंक थोड़ा सा लास्ट के पॉइंट में डिस्कशन हो पाया, बट आई थिंक उस पर एक बड़ी डिस्कशन की जरूरत है कि यूएस पॉलिटिक्स से इंडिया कैसे अफेक्ट होता है. आई मीन यूएस इलेक्शन से, डेमोक्रेट से, रिपब्लिकन से, या डिफरेंट हिस्टोरिकल कैसे हुआ है और आगे कैसे होगा, तो इंडिया के हित में क्या है. आई मीन या इंडियंस लिविंग इन यूएस या इंडिया जनरल ज्योग्राफी इकोनॉमी कैसे होती है, उस पर एक डिस्कशन विल ट्राई टू आई मीन अरेंज सम टाइम इन द नेक्स्ट मंथ. Yeah. I want to add one point, which I think is very relevant to us as Indians and maybe us as a people. कि recently जो UK में हुआ है, right? You have the Prime Minister is Rishi Sunak, the First Minister of Scotland is Hamza Yusuf. I think people are getting excited for Vivek Ramaswamy because of all of this, which is people are thinking, well, people of Indian origin has great acceptance in the West. I think what's really important to draw a difference on is that the UK is fundamentally a different democracy than the US.
The UK is not a racial democracy, it is a class democracy. वहां पे क्लास डिवाइड इज द डिवाइड, वहां पे रेस डिवाइड है ही नहीं आज की तारीख में. इट्स अ वेरी, जैसे वहां की इंडियन कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी, बांग्लादेशी कम्युनिटी, अफ्रीकन ओरिजिन कम्युनिटी, like from Nigeria and Botswana and all these other places, and Algeria जहाँ पे heavy वहाँ पे representation है, they are already strongly integrated in the British identity, right? आज की तारीख में ऋषि सुनक is trying very hard to be a Hindu, but he is primarily British, right? मतलब, and the same thing can be said about Hamza Yusuf. He's मतलब ब्रिटिश primarily हिंदू भी Scottish तो at this point. एग्जिस्ट करता है ना, ट्राइंग एग्री, बट कौन सी आइडेंटिटी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, राइट? हिंदू तो क्या है, वो उसके लिए अब होना जरूरी है, बिकॉज ही अंडरस्टैंड. सो इफ यू लुक एट ब्रिटेन, ब्रिटिश हिंदू पॉपुलेशन हैज ऑलवेज predominantly voted for the Labour Party. So Rishi Sunak is now trying very hard to get that Hindu voter to vote in favor of the Conservative Party. So he's now playing on that identity. It's like Rahul Gandhi randomly realizing that he's Hindu, राइट? रैंडमली वो गोत्र को वहां पे प्राइमरी अपना वो बना रहे हैं. तो बट लाइक मोदी जी इज अ डिफरेंट हिंदू एंड राहुल गांधी इज अ डिफरेंट हिंदू, राइट? मोदी जी की आइडेंटिटी में उनका हिंदुइज्म हैज ऑलवेज बीन हिज प्राइमरी गाइडिंग फैक्टर, राइट? दैट्स वेयर ही कम्स फ्रॉम. Rahul Gandhi ji has realized कि his Hindu identity is a very important part of his electoral journey now. So similarly, I think the UK has been a class politics, class division democracy, and the US is a racially divided democracy. So Vivek Ramaswamy is not the same candidate as Rishi Sunak or as Hamza Yusuf or as Sajid Javid. Right? He's not in that same league at all. Because the second he starts going into primaries in North, in the Midwest, in the Deep South, people will look at him and we go, कि ठीक है सेकेंडरी में चुन लेंगे इसको, but they are not going to entertain him as the president ever. So yeah. इसका मैं एक एग्जांपल इंडिया के बेसिस पे देना चाहूंगा. इंडिया में कास्ट इज अ डिवाइसिंग फैक्टर, बट नेशनल पॉलिटिक्स लेवल पे देखो तो हिंदूज आर विलिंग टू वोट फॉर एनीवन फ्रॉम ब्राह्मण्स टू क्षत्रियस टू शूद्रस, राइट? अब वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है नेशनल लेवल पे. मतलब रीजनल लेवल पे होगा, कोई कास्ट किसी कास्ट के लिए वोट नहीं करेगी, बट पीपल आर नॉट नेसेसरली, लोग मोदी जी को देख के ये नहीं सोचते कि ये लोअर कास्ट हिंदू है. पीपल थिंक ऑफ हिम एज हिंदू. इट्स सिंपल, सिंपल. मतलब राइट, आप योगी जी को देख के ये नहीं सोचते ये अपर कास्ट हिंदू है. मतलब नेशनल आप लेवल बोलना देव यही चाह रहे हो जैसे इंडियंस मुस्लिम को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे, yes, मैं वही वैसे बोलने वाला यूएस था बिल्कुल. वाले बट नॉन वाइट को या कम वाइट yes, को नहीं बनने देंगे. मतलब यस, मैं वही बोलने वाला हूँ कि जब नेशनल लेवल पे देखोगे तो हिंदूज फॉरगेट कास्ट लाइंस. मतलब वो रीजनल लेवल पे वो देखेंगे 100%, बट नेशनल लेवल पे वो कास्ट लाइंस को थोड़ा सा सबड्यू कर देते हैं. बट नेशनल लेवल पे आज भी रिलीजन इज गोइंग टू बी अ डिवाइसिव फैक्टर इन इंडिया, राइट? यू विल फाइंड इट large sections of Hindu population might not vote for an openly for a candidate who is, let's say, pushed by a party who is Muslim, right? Hindus will not be as comfortable voting for that. वो हमारे वोटिंग पैटर्न्स है, राइट? इट्स नॉट अ कमेंट और एनीथिंग, इट्स जस्ट द रियलिटी. तो यूएस में वो फैक्टर है. आई जस्ट थिंक दैट्स द रियलिटी. या मतलब इस पे मेरा काउंटर है, लेकिन अगेन लेट्स नॉट, नहीं प्लीज दीजिए ना. आई थिंक दैट्स द होल मतलब पॉइंट ऑफ दिस. 2004 में इंडियन में तो सोनिया गांधी को इलेक्ट किया ना एज ए क्रिश्चियन. भले वो पीएम बनी नहीं, मनमोहन सिंह को बना दिया, पर मैंडेट तो 2004 में सोनिया गांधी के नाम पे ही था ना. बट आप क्या ये आप क्या ये नहीं एक्सेप्ट ए, करोगे ए, कि ए, एक चीज ये 2004 वाज अ डिफरेंट इलेक्शन. अगेन 2004 में बीजेपी के मतलब इट वाज नॉट अ वोट फॉर कांग्रेस, इट वाज अ वोट अगेंस्ट एलाइज ऑफ बीजेपी प्राइमरली एंड बीजेपी आल्सो. मल्टीपल रीजन, एक जनता बाहर नहीं निकली वोट करने. मतलब आई नो दैट फ्रॉम फर्स्ट हैंड. बड़ा डिस्कशन है आई थिंक कि व्हाई इंडिया वोटेड. पर एक चीज अपन बोल सकते हैं ना कि 2004 का चुनाव हो या 2009 का चुनाव हो, मतलब इंडिया का जो प्रेसिडेंशियलाइजेशन ऑफ इलेक्शंस है वो अब हो रहा है धीरे धीरे. बट उस पॉइंट तक भी वी वोटेड वेरी हेवी ऑन पार्टी लाइंस, नॉट नेसेसरली ऑन पीपल लाइंस, राइट? वो जो हेवी प्रेसिडेंशियलाइजेशन ऑफ आवर नहीं, इलेक्शन अगेन मतलब अगेन वो आई वुड इसमें लाइक टू सब स्ट्रांगली इंदिरा गांधी डिसएग्री. भी इस आ पे नहीं जाएगी. जाते हैं. इंदिरा हाँ. गांधी के समय इंदिरा गांधी को हाँ. वोट पड़ते थे, आपकी आवाज वाजपेयी को वोट पड़ा, नेहरू को वोट पड़ा. आई थिंक ठीक है, इंदिरा गांधी के मरने पे, इंदिरा गांधी के वजह से राजीव गांधी को वोट पड़ा.
राजीव गांधी जब हारे गए तो एंटी राजीव गांधी वोट पड़ा, जब राजीव गांधी मरे तो एक प्रो सिंपैथी वोट पड़ा, जिस वजह से नरसिम्हा राव रहे। तो इंडिया पे एक बड़ा लंबा हमेशा व्यक्ति पूजा सबसे बड़ी रही है, व्यक्ति को देख के पूजा पड़ी है, पर इस पे डिस्कशन कभी व्यक्ति- और करेंगे नेक्स्ट। व्यक्ति को देख के वोट दिया जाता है, बट आप क्या बोल रहे हो कि पार्टी लेवल में कोई, एक बात बताओ, पार्टी लेवल का इंडिया में जो मतलब होता है ना कि भाई हम तो पंजे को ही वोट डालेंगे या हम तो कमल को ही वोट डालेंगे, वो बहुत हैवी था इन द लास्ट 20 years एंड नाउ दैट इज चेंजिंग। नहीं, मैं बताता हूँ, मेरे घर में मेरी दादी कांग्रेस को वोट करती थी और दादाजी भाजपा को वोट करते थे। तो जब दादी जी से जब मैंने पूछा कांग्रेस को क्यों वोट करती, तो उन्होंने बोला क्योंकि इंदिरा गांधी कांग्रेस से थी। रीजन इज नॉट अ पंजा, रीजन इज अ व्यक्ति। नहीं, तो एक और चीज है, वो लीडर पे भी डिपेंड करता है। तो इंडिया में जब स्ट्रॉन्ग लीडर आया तो पीपल हैव वोटेड फॉर द लीडर। इंडिया में जब वीक लीडर आया, नरसिम्हा राव डिडंट गेट वोट बिकॉज ऑफ नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव गॉट सम कांग्रेस वोट, गॉट सम एंड सिंपैथी वोट्स। 96 में जनता दल की जो सरकार थी, दैट वाज अगेन मतलब वोट नॉट इन फेवर ऑफ बीजेपी, नॉट इन फेवर ऑफ कांग्रेस, मतलब दैट वाजंट अ लीडर्स वोट। बट 2019 was a leaders election. Indira Gandhi and Nehru has always been leaders election. ठीक है, इस पे भी डिस्कशन करेंगे एक दिन। ठीक है, डिस्कशन के बहुत पॉइंट्स मिल गए, बट इट्स बीन ओवर 1.5 hours दैट आई हैव बीन डिस्कसिंग इन यूएस। तो यूएस पे क्लोजिंग स्टेटमेंट्स, बाजी जी क्लोजिंग स्टेटमेंट। यस, क्लोजिंग स्टेटमेंट। आई थिंक Vaibhav will start, Dev, Ayush, and then I will close, have the closing statement and stop it. I think Vaibhav। हाँ, तो यूएस इलेक्शन पे ही रखते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट, इधर उधर नहीं जाते। So US election seems pretty straightforward. Democrats are going to win. Biden is going to be the candidate. It is primarily going to be Biden versus Trump in all probable circumstances, and Biden is going to be is going to have a easy run probably, if not easy, slightly difficult, but he's going to make it. That's all. So closing statement, I'm just concurring with Vaibhav ji, and I'll say Andrew Yang 2028. Moving on. आई थिंक मतलब मैं तो इस तरह से क्लोजिंग दूंगा कि मेरे को जो चीजें समझ में आई, दैट वाज गुड। और बेसिकली स्ट्रक्चर जो है, टू पार्टी सिस्टम और क्या मुद्दे हैं क्या नहीं है, वो चीजें समझ में आ रही है। बाकी लग रहा है कि जीतेगा तो ट्रम्प ही। मतलब जैसे देव ने कंकर किया, वैसे मैं भी कंकर करना चाहूंगा कि आई एग्री विद आयुष। ठीक है, मतलब रैशनल तो है आप लोग के, और अगेन वो फैक्ट बेस्ड है, डेटा बेस्ड है, जिसमें लग रहा है कि बाइडन इज विनिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मे भी हो सकता है जीत रहा होगा, हो सकता है जीत भी जाए। ठीक है, पर मतलब दिल है हिंदुस्तानी, तो दिल तो ट्रम्प के साथ है। I think why would you equate Hindustani with Trump? That makes no sense. मतलब कोट से वो कर रहे थे Effectively, Vaibhav ji, I'd like to point out कि जो पैनल के 2 होस्ट हैं, वो इफेक्टिवली जो सेल्फ उनके डिस्क्राइब 2 एक्सपर्ट्स को लाए थे, उन एक्सपर्ट्स की कोई ओपिनियन नहीं सुननी है। हमने आपकी 1.5 घंटे की कहानी सुन ली, पर हम तो क्या है, ये रोटी ही खाएंगे, भले मोदी जी कितना भी समझा दे कि श्री why not विवेक रामस्वामी? होप रहना है तो होप थोड़ा बड़ा। ट्रम्प नहीं, मतलब I want विवेक रामस्वामी। इन्हीं रिपब्लिकन्स, मतलब अगेन वो नाम अभी दोनों का ही अलग अलग जान रहे हैं वैसा। हाँ, आई थिंक अभिमन्यु का है कि रिपब्लिकन, मेरा रिपब्लिकन से पार्टी से कुछ वो नहीं है, मेरे को बस मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है। अभिमन्यु जी चाहते हैं 2024 में रिपब्लिकन जीते हैं, 2028 में रिपब्लिकन जीते हैं, वो 2029 से रिपब्लिकन डिसाइड कर लेंगे कि वीजा तो मिलना ही नहीं है भारती जी को, तो कभी यूएस जाना ही नहीं है फिर भारती जी को, क्योंकि रिपब्लिकन सरकार में। यूएस क्लोजिंग स्टेटमेंट हो गया, अब खत्म करते हैं ये सारी डिस्कशन, अगले बार को ये रखते हैं। थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।